everyone, welcome back to my channel that is Beyond Dentistry. I'm Dr. Akanksha Gupta is going to discuss our series which we have disease of salivary gland. In the last video we discussed the cyst of salivary gland. In this video we are going to discuss the salivary gland tumor. And so about salivary gland tumor, there we have a small classification which we have a benign tumor and malignant tumor. In the benign tumor we have pleomorphic adenoma, Warthin tumor, ontocytoma and basal cell adenoma, cansicular adenoma and ductal papilloma. So pleomorphic adenoma is the most common salivary gland tumor and second most common is Warthin tumor. Okay, so and this is all about benign tumor. Now malignant tumor. So malignant tumor we have mucoepidermoid carcinoma, adenocarcinoma and acinic cell carcinoma, adenoid cystic carcinoma, squamous cell carcinoma and malignant mixed tumor. So the most important or most common which we are going to discuss that we have in the benign tumor we have pleomorphic adenoma, Warthin tumor. While in malignant we are going to discuss the mucoepidermoid carcinoma, acinic cell carcinoma and adenoid cystic carcinoma. So let's begin with the pleomorphic adenoma. It is a most common salivary gland tumor. Okay, and this is also called as iceberg tumor, endothelioma, endochondroma and mixed tumor. Why it is called a mixed tumor? Because it shows the remarkable histological diversity. So what is remarkable histological diversity? Basically it is a mixture of two differentiation. First with epithelium and second one is mesenchymal differentiation. So first is epithelium and second one is mesenchymal differentiation. So these both differentiations. So what happened as we going to enumerate the pleomorphic adenoma in the histological features, what we see, we appreciate the two cells which we have epithelium cell and myoepithelium cells. So these epithelium cell and myoepithelium cell is connecting or which we show, and that's why we call it as mixed tumor. Now we have a clinical features. So clinical feature, first we have age. So basically first we have age. So it around third to fourth decade of life or young adult or children's most commonly affected. And sex, in sex female more predilection. So what happens is about 6:4 ratio which we see. And we have site. So site is the most common site in which pleomorphic adenoma may see is parotid gland, more specifically superficial lobe of parotid gland. Okay, now we have site. Next we have shape. So as it is small, it is round or oval shape and it bigger, it will lobulated. अगर हमारा जो प्लीओमॉर्फिक एडिनोमा है वो अगर हमारा स्मॉल होगा तो हमें राउंड और ओवल अपीयरेंस देगा, वाइल अगर ये बिगर हो जाएगा तो ये लॉबुलेटेड अपीयरेंस देगा. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव कंसिस्टेंसी. सो कंसिस्टेंसी इट्स लाइक फर्म और रबरी अपीयरेंस दिखेगा. ठीक है. एंड वी हैव साइज. So size we have हमें प्लीओमॉर्फिक एडिनोमा ट्यूमर है, इसका साइज हमें समझ पड़े क्रिकेट बॉल अपीयरेंस दिखेगा, लाइक क्रिकेट बॉल जितनी होती है उतना अपीयरेंस दिखेगा हमें. एंड अबाउट इज 1 to 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर. ओके. नेक्स्ट वी हैव अ फिक्सेशन. सो फिक्सेशन में क्या होगा कि नो फिक्सेशन. अगर जो हमारा ट्यूमर है ये हमारे ना ही डीपेस्ट टिश्यू जो है उससे कनेक्टेड होगा, ना ही सुपरफिशियल और हमारी स्किन है उससे कनेक्टेड होगा, ये फ्रीली मूवेबल होगा. ओके. एंड वी हैव अ सरफेस. सो सरफेस में क्या हो रहा है, हमें इसकी सरफेस स्मूथ होती है. ओके. एंड सिम्टम्स. अब हमें सिम्टम्स कैसे दिख रहे हैं. सो इट बेसिकली इट इज स्मॉल,
painless nodule which is slowly increase in size and sometimes intermediately. So intermediately basically what happen कि अगर हमारा tumor है, it start growing but at a certain period stop and again start growing, that's we called as intermediate. Okay, so let's quick revision of clinical presentation. एज हमारी हो गई 3 to 4 decade of life and sex females are more predominantly and side we have parotid gland, more specifically superficial lobe of parotid gland. size हो गया हमारा cricket ball shape की होती है, it's about 1 to 2 centimeter in diameter. फिक्सेशन हमारा नो फिक्सेशन, इसका ना ही डीपर टिश्यू से होगा एज वेल एज अ ओवरलाइन स्किन एंड सरफेस हमारी इसकी स्मूथ होगी एंड शेप इसकी होगी समवट, अगर ये स्मॉल है तो ये होगा हमारा राउंड और ओवल, अगर इस बिगर है देन इट इज लॉब्यूलेटेड एंड कंसिस्टेंसी इट इज फिल्म और रबरी कंसिस्टेंसी होगी. सिम्टम्स इट इज अ स्मॉल पेनलेस नोड्यूल होगा विच इज स्लोली इंक्रीज इन साइज, बहुत तेज नहीं बढ़ता, ये स्लोली इंक्रीज इन साइज होता है. ट्रीटमेंट, so what we done in the treatment of pleomorphic adenoma, we do the surgical excision with in both minor and major salivary gland and we do the local resection with minimal surrounding tissue. In case of parotid gland what we done the excision with control of a facial nerve. If our अगर हमारी पेरोटिड ग्लैंड में ट्यूमर हुआ है, प्लीओमॉर्फिक एडिनोमा अगर हमारा पेरोटिड ग्लैंड में हुआ है तो उसमें अगर हमारी फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो उसकी वजह से समवॉट कई केसेस में क्या होता है हमारा फेशियल पैरालिसिस भी हो जाती है. तो इसीलिए हम उसको फेशियल नर्व को कंट्रोल करने के बाद लाइक टेकन केयर करने के बाद हम एक्सीजन करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर प्लीओमॉर्फिक एडिनोमा. This is all about pleomorphic adenoma. So Warthin tumor and we have a mucoepidermoid carcinoma, acinic adenoid cystic carcinoma and acinic cell carcinoma. These topic tumor we will discuss in the next video. So stay connected. Thank you for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe.